Assalamu alaikum, my dear students. I am your teacher Amir Hussain, and we will discuss in this YouTube lecture. We will discuss new topic, and this is topic 6th of your 5th chapter, and this topic is India and the world of print. Actually, in this topic, what we have to study is how or we will study actually the history of the printing in India. In this topic we will discuss history of printing in India, how printing technology, how and when printing technology came to India, how it was introduced in India, how it began in India, कब और कैसे जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, किन्होंने लाई, हाउ एंड व्हेन है, यहाँ पे व्हेन है, हाउ एंड व्हेन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी केम टू इंडिया, हु ब्रॉट दिस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, किसने लाई, and what are the various developments that were seen in the printing technology of India after that. So we will discuss all these things. We will discuss the printing world, the printing culture of India, the history of the growth of printing technology in India. प्रिंट टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री क्या रही इंडिया में, कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, वो सब हम इस टॉपिक में देखेंगे. एंड we will discuss this topic under these headings. We will discuss this topic under two headings, or we will divide this topic into two these parts. One part can be called the period before age of printing. प्रिंटिंग से पहले वाला पीरियड, उससे पहले वाला दौर, सेकंड पीरियड आफ्टर और पीरियड ऑफ age of printing. We will discuss this topic into two categories, under two categories, or we will study this topic under two broad headings. One, period before the age of printing in India. इंडिया में प्रिंटिंग से पहले जो है किस तरह का माहौल था, किस तरह की दुनिया थी. एंड पीरियड ऑफ एज ऑफ प्रिंटिंग, जो फिर प्रिंट इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, जो प्रिंट है, द when the print was introduced in India. After that we will discuss that period. हम वो पीरियड भी देखेंगे जब प्रिंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया. And who introduced this print in India? We will discuss, we will study all these things in this topic. So let us begin this topic now. We will first take up the first part, that is period before the age of printing, or before the age of, you can also write it, before the age of print in India. We will discuss firstly this part, that is period before the age of print in India. Actually in this we will look into how ideas and information were written before the age of printing.
or before the age of print in India. प्रिंट से पहले इंडिया में कैसे जो है कैसे आइडियाज और इंफॉर्मेशन को लिखा जाता था. दैट मीन्स कि प्रिंट से पहले इंडिया में अगर हम देखेंगे कैसे इंडिया में आइडियाज और इंफॉर्मेशन को लिखा जाता था जब प्रिंट ही नहीं था. इन दिस द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग that is interesting about India is that India from or since ancient times India had a rich and oldest tradition of and these or tradition of writing. So in India from ancient times आप देखोगे इंडिया में पुराने जमाने से ही जो है इंडिया का एक ट्रेडिशन रहा है. कौन सा ट्रेडिशन? इंडिया हैड ए वेरी रिच ट्रेडिशन. इंडिया का एक रिच ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है एंड आल्सो द ओल्डेस्ट. बहुत पुराना ट्रेडिशन है वो, सदियों से चला आ रहा है राइटिंग का. इंडिया में पहले से ही एंशिएंट टाइम से ही लिखते थे. एंड द earliest writings in India were mainly in the form of manuscripts. It were manuscripts. And what are these manuscripts? Actually this term manuscript, it is actually a Latin word. Actually this word manuscript, it is derived from two Latin words. ये दो Latin words का मजमुआ है, सेट है, उनकी कॉम्बिनेशन है दो Latin words की. One you can see is mano or mano. One is mano and second word is derived from scriptus. SCRPTUS, scriptus. First is mano and second is scriptus. So this manuscript term is derived from two Latin words. One mano and second is scriptus. So far as this mano is concerned, mano in Latin means hand. मैनो का मतलब है हैंड यानी कि हाथ. एंड स्क्रिप्टस मीन्स टू राइट. इट मीन्स टू राइट. सो these are two words. These two words, that is mano and scriptus. Mano, which means this hand, and scriptus means to write. Therefore this manuscript, it means written by hand. It means written by hand. हाथ से लिखना. This manuscript means written by hand. And these manuscripts, which were the earliest writings in India, these were actually handwritten डॉक्यूमेंट्स. ये असल में हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स है जो इंडिया में पाए गए हैं. दैट्स वाई कि इंडिया हैज ए रिच एंड ओल्डेस्ट ट्रेडिशन ऑफ दिस हैंड राइटिंग, दैट इज these manuscripts, which is in the form of these manuscripts. And manuscript means those documents which have been written by hand, जो हाथ से लिखे होंगे, written by hand. And these manuscripts which
were written in India, which existed in India since the ancient times. These were written on palm leaves or palm leaves, or also on cloth, sometimes on metal, on barks and other such things, or handmade paper, or also on handmade paper. So these manuscripts, इनको लिखा जाता था, इन मैनोस्क्रिप्ट्स को हाथ से, और इनके लिए जो मटेरियल यूज होता था, लिखने का मटेरियल, वो आम तौर पे पाम लीव्स होते थे, जिसको हम खजूर की जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं, उन्हीं पे लिखा जाता था। क्लोथ्स पे लिखा जाता था, कभी कभार मेटल्स पे लिखा जाता था, बार्क्स पे टहनियों पे लिखा जाता था, हैंड मेड पेपर्स पे भी लिखा जाता था। एंड these manuscripts of India, they were written in various or large number of vernacular languages. इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखा गया है। vernacular means which were Indians own languages, indigenous languages जो है, original languages, उनमें लिखा गया है। And but we have three main languages which were mostly used in these manuscripts. 3 languages ज़्यादातर यूज हुई है, 3 languages में ज़्यादातर manuscripts इंडिया में पाए गए हैं, वो लिखे हुए हैं 3 languages में। 1 is Sanskrit, second is Arabic, third is Persian. अरबिक में, संस्कृत में और फारसी में जो है, इन ही 3 लैंग्वेजों में ज्यादातर मैनोस्क्रिप्ट्स इंडिया में लिखे गए थे। और ये खुद दिखाता है कि इंडिया का ट्रेडिशन जो है, इससे बहुत पहले राइटिंग से रहा है। एंड besides these 3 languages, various other vernacular languages, in various other vernacular languages, manuscripts were also written. These includes Kashmiri language, Tamil language, Telugu language, Kannada language, and other languages, other dialects जो है उसमें लिखे गए हैं। And the pages of these manuscripts, they were illustrated. Pages were illustrated. Pages were illustrated. जो pages है इन manuscripts के, उनको ब्यूटीफुली जो है इलस्ट्रेट किया गया। दैट मीन्स उनको थ्रू पेंटिंग्स दे वर ब्यूटिफाइड, दे वर डेकोरेटेड। उनके जो है बॉर्डर्स वगैरह, साइड्स वगैरह है, उनमें इलस्ट्रेशंस लगाई गई हैं, उनमें वो है पिक्चर्स वगैरह में मिनिएचर्स के थ्रू जो है सजाया गया है, डेकोरेट किया गया है। एंड these manuscripts, these were either pressed between wooden covers or these were sewn together. Yeah, or these were sewn together. They were sewn together in order to preserve them, for preservation. For preservation purposes, बचाने के लिए जो है, इनको महफूज रखने के लिए जो है, इन मैनोस्क्रिप्ट्स को, इनके पेजेस को जो है वुडन कवर्स के बीच में रखा गया है। दे वर प्रेस्ड, इन पे है प्रेस, दबाव रखा गया है वुडन
कवर्स का, और समटाइम्स दे वर आल्सो सिवन टुगेदर। इनको जो है वो सिलाई वगैरह के थ्रू जो है इनको प्रिजर्व करने की कोशिश, एक दूसरे के साथ जो है टुगेदर रखा गया है, फिर इनमें सिलाई वगैरह हुई है और फाइनली इनको कोशिश की गई है प्रिजर्व करने की। एंड दीज मैनोस्क्रिप्ट्स which begin from ancient times, these continued even after the introduction of press. Even after the introduction of press. Sorry, introduction of printing. Even after the introduction of printing or print. अगरचे प्रिंट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन प्रिंट इंट्रोड्यूस होने के बावजूद भी दीज मैनोस्क्रिप्ट्स कंटिन्यू टू बी प्रोड्यूस्ड, ये तब भी जाके प्रोड्यूस हो रहे थे इन लार्ज नंबर्स। लोग तब भी जाके पसंद करते थे इन मैनोस्क्रिप्ट्स को, और ये मैनोस्क्रिप्ट जो है इनके ये बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे थे, अगरचे ये जो है प्रिंट भी डेवलप हुआ था, प्रिंट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड even they continued, these manuscripts they continued till late 19th century. even 19th century के आखिर तक जो है ये कंटिन्यू रहे, ये प्रोड्यूस हो रहे थे ये मैनोस्क्रिप्ट्स। so these were produced till 19th century. however these manuscripts they were very expensive and also fragile. These manuscripts were very expensive and fragile. ये बहुत कीमती थे, हाँ, ये बहुत इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। and these were fragile, ये जो है इनमें फ्रेजाइलिटी भी आप देखोगे, ये बहुत नाजुक थे। and that is why, because of these things, they could not be handled, they needed to be handled very carefully. Needed lot of care while handling. इसीलिए जब इनको हैंडल किया जाता था, उठाया जाता था, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता था। They had to be taken or handled very carefully. And also the another problem that these manuscripts had was that since these manuscripts they were since the script in which these manuscripts were written in different styles. So the point is that since these manuscripts, since these manuscripts, these hand written documents, these documents were written in various scripts. Their script was however written in different styles. इनका script जो है वो बहुत सारे styles में लिखा जाता था in order to decorate them, and which made the reading of these manuscripts very difficult. Therefore, they were very difficult to read. They could not be read. These manuscripts could not be read very this easily because their scripts were written in different forms, in different styles. So these are some of the difficulties which are associated with these manuscripts. And because of these things, because of these difficulties, these weaknesses or problems associated with these manuscripts,
these manuscripts could not be used in everyday life. Manuscripts not used in everyday life. ये हर दिन जो है यूज नहीं होते थे, यानी कि these manuscripts were not preferred in everyday life. And this was true of this Bengal, which we will discuss in our next this lecture, next video. Thank you.